I'm good, Aisha. Thank you. Yeah, the day today is a bit busy. We got a few meetings, online things going on in the department and in the company. So yeah. Yeah, two reasons. One is that I need to be I feel that I need to lead from the front, so my team also comes. Secondly, I'm not very good at home. Working from home is a challenge for me. One, I live in an apartment and I don't have a separate study, and there's too many distractions. The kitchen is in front of me. The kids are there, so I'm a lot more productive in the office. Maybe to not that extent. I've seen in jazz, I've worked with many other organizations in my previous careers and worked with top management teams, but I would have to say that this particular ELT is really amazing in terms of their the way they handle crisis, emergency situations. Even before COVID, very calm, very quick in decisions, very proactive. I've worked with many major Fortune 100 companies, and their top management teams literally, I mean, they're completely, they collapse facing emergencies. So I've been quite lucky actually. So it's not been that stressful actually. The scale is a lot bigger because it's not only a company crisis, it's a kind of a national and a societal challenge and a crisis. But it's been okay. Good question. One, in an organization like Jazz, people are looking for direction, for leadership, for motivation. So it's very important that the leader remains calm and is on top of things, and they must be well informed. And secondly, and maybe more importantly, is that the importance of decision making. So decision making capacity and capability is extremely important in a crisis. Panic is never good, and it does put leaders under pressure. But then that's where your leadership really comes out. You need to control the panic, make sure people are calm and composed, and they keep things in perspective. Panic doesn't help in any, there's no point, it doesn't help anything, but it's natural. People do panic, and it's just a natural human, phenomenon. But that's where the, true leadership comes in. Well, I'll start with the things that they should never do. One, they should not panic themselves. Handling crisis is one of the three biggest fears in global CEOs. I read this survey recently, and crisis management was one of the most difficult and top challenges that leaders face. And so the things that they should not do is panic themselves. Two is they should not be hasty in decisions. And it's very important, and this jives in with the first part of your question, is that they need to really get all the information that they possibly can before making a decision. So there's a lot of things going on in the environment, in the company, outside the company, and it's okay to take a breath, take a step back, just kind of analyze the whole situation, what's going on, where are we, and just prioritize. Prioritization is extremely important, remaining calm is extremely important, and then making decisions. Well, first I'll start with the organization, because there's some things which we did very well, and I think it was like almost textbook case study stuff. And one was we were very proactive. The time when we announced work from home, I think it was one of the first organizations in Pakistan. It was a strong decision, and I remember Amir, it was he did face some opposition, but I would actually give him credit for taking that stand and going with it. So in COVID, we've seen that this is more of a national societal challenge. So it's a little bit different than a normal crisis. Normally, crisis is an event and it's specific to a particular organization. In this case, the whole society is kind of affected. So you're looking at families, you're looking at our customers, and that's very key to our business continuity. So the three things that were in a priority or that went very well were, the business continuity element, and all the divisions, played a very good part in that. The decision-making, proactiveness at the top, and where you come in, communication. Critical area in all crisis is crisis communication, and I think the way we've handled that here in your area and overall in the company, the messaging was constant, it was consistent, and it was very good in the terms of that it was repeated, and that's what's needed. People need to hear the same thing, especially precautions to take, for example, and that is why we until yesterday we had no case. We were one of the few organizations that were not affected directly. And that was the main reason. The people were, listening to us, and they were, taking the steps that were needed.
Definitely, because I obviously have a network in other organizations. I get a lot of calls, and by far, I believe that Jazz has handled the crisis way better than most organizations that I know of. Yeah, we have a huge staff out in the field in the commercial and technology areas, and really hats off to them. We have about, I think, about 9,000. There's thousands, and nationwide, remote areas, really affected areas, but they've been very brave, and we hats off to them. Yes, we have provided them support. We've given them the safety gear, but just even the natural, because obviously they face pressures, family pressures, so there is a hesitant, and that's just human nature. But the way they've kind of really geared up, and and that's why our business is and under these circumstances is doing quite well. Thank you. It's more gratitude, I would say. Thank you for being there. Thank you for supporting us. Thank you for supporting the company, and doing what you do on a daily basis, and being brave, taking the decisions and going out there. काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी स्टोरीज़ हैं. I mean, टॉप मैनेजमेंट से भी हैं, जूनियर स्टाफ से भी हैं, सप्लाई चेन में बीइंग ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, और वो जिस तरह उन्होंने प्रोक्योरमेंट को संभाला है, कंटिंजेंसी प्लानिंग जिस तरह की हुई है. फॉर एग्जांपल हमारे सिम कार्ड्स की प्रॉब्लम बहुत आ रही थी, कुरियर सर्विसेज बंद हो गई थी, ठीक है ना, तो वो बहुत एक बड़ा चैलेंज था. हम बहुत डिपेंडेंट हैं ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स पे, तो वो जिस तरह मैनेज किया, हमने फटाफट डिसीजंस ली. तो बहुत सारे लोग हैं, एक को सिंगल आउट करना मेरे ख्याल थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी. तो मेरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया. डिस्पैच करनी चीज़ें उन हालात में, नेशन वाइड हमने हज़ारों की तादाद में मास्क, सैनिटाइजर भेजे हैं हर जगह. तो वो मेरी टीम है, काशिफ जंजुआओं का मैं नाम ख़ास तौर पे लूँगा, क्योंकि वो बहुत आते रहे हैं ऑफिस में, जिस तरह उन्होंने कंट्रोल किया. एंड दूर से आते हैं, पिंडी से आते हैं इस्लामाबाद, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया स्पेशली, और खुद से स्टॉक प्रोएक्टिव कंट्रोल किया एंड डिस्पैच किया. जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो भिजवाइए. बाकी मेरे डिपार्टमेंट के अलावा बहुत सारी डिवीजन ने बहुत अच्छा मेरे का काम किया है. जी नहीं, मेरा तो ये एरिया है, तो मैं तो पूरी करियर मेरी आधी इसमें गुजर गई है, तो बहुत ज़रूरी है मेरा ख्याल है. बिज़नेस हर ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फेस करती है, तो जब ये आप कंट्रोल करते हैं और एक प्लान डॉक्यूमेंट होता है, तो फिर एक एक्सरसाइज होती है कि जिससे आपको पता चलता है कि यार कुछ भी हालात हो जाए तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपना बिजनेस. बेशुमार एग्जांपल्स हैं, दुनिया में क्राइसिस आते हैं. 9/11 का आया, 40% बिजनेसेस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कोलैप्स कर गए. वजह यही थी कि उनके पास प्रोसीजर्स प्लान्स नहीं थे क्राइसिस हैंडलिंग करने के या बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के. ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अभी देख लें, तो और हम इसमें अब कोविड क्राइसिस में हम ये फेस कर रहे हैं. सारे बिजनेसेस अफेक्टेड हैं, बट वो कंपनी सर्वाइव करेंगी, सक्सीड करेंगी जो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में, रेजिलियंस में स्ट्रॉन्ग है. एंड आई थिंक जैज़ बिल्कुल फ्रंट पे है इस पे. नहीं, एक सरप्राइजिंग चीज़ हमने ये असेस किया था एक्चुअली कि हमारा जो प्लान डॉक्यूमेंट हमने बनाया 95% कंप्लीट हो गया है. उसमें चीज़ें कवर हो रही हैं या नहीं, तो बहुत हद तक कवर हो रही थी, विच इज़ वेरी गुड. हमारे लिए काफ़ी एक बड़ी सक्सेस थी ये. अभी अब क्राइसिस के बाद हम सारे इसको दोबारा देखेंगे, बट कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं कहूँगा जो कवर नहीं हुई. और आई थिंक उसमें कुछ लीडरशिप से आई, ELT से देयर वाज अ मोटिवेशन और एक ड्राइव, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल गई थी कंपनी को. शुरू के कुछ दिन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी, बट आई थिंक वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, काफ़ी जो है ना हद तक हमने चीज़ों को संभाल लिया, गेज कर लिया था कि अब हमने क्या करना है, कैसे करना है. और कमर्शियल डिवीज़न, टेक्नोलॉजी डिवीज़न, इस तरह वो हमारे नेटवर्क अभी चल रहा है. क्वालिटी ऑफ सर्वे में हम टॉप पे आए हैं PTA के मुताबिक. तो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करती है कि हमारे बिजनेस कॉन्टिन्यूटी इन बिल्ट है, मैं कहूँगा हमारी DNA में आ गई है, जो बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल द डिविजन्स एंड कमर्शियल टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पे. जी, मेरी 25-26 ईयर्स की करियर में बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन मैंने फेस की हैं. और पर्सनल मैं एक एयरलाइन में काम करता था, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब थी. मैंने कहा अगर तो मैंने ये स्ट्रेस ले लिया ना, फिर तो मैं गया. तो मैंने अपने आप को कंडीशन किया. उस ज़माने में 20-25 ईयर्स पहले की मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट इतना लोगों को नोन नहीं था. लेकिन मैंने फील करता कि अगर मैंने ये स्ट्रेस को काबू नहीं किया तो फिर मेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी. तो मैंने अपने आप को बहुत सेल्फ कंडीशन किया. आई लर्नड माई सेल्फ, खुद ही अपने आप को ट्रेन किया,
फिर जैसे जिम्मेदारी आती गई, सीनियर पोजीशंस में आते गई पिछले ऑर्गेनाइजेशंस में, यू नो पीपल लुक अप टू यू। और मैंने हमेशा देखा अगर आप घबरा गए तो फिर पूरी कंपनी घबरा जाएगी। तो लोग कहते थे यार अगर सलमान काम है बस फिर ठीक है, काम चल रहा है ठीक है।